दोस्तों नमस्कार, मैं हूं मनोज लांबा और आज हम फिर लेके आए हैं आपके लिए सेक्शन 148 से रिलेटेड एक नया जजमेंट जो आपके लिए 148 रीअसेसमेंट प्रोसीडिंग में हेल्पफुल होगा, ऐसा मेरा मानना है। तो शुरुआत करते हैं। आज की जजमेंट की डिस्कशन क्या है? आज की जजमेंट, इसके लिए मैं आपसे अपनी स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा। बने रहिए मेरे साथ। क्या आप मेरी स्क्रीन देख पा रही हैं? एक बार बता दीजिए मेरे को चैट बॉक्स में लिख के। आर यू एबल टू सी माई स्क्रीन? प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स। यस प्लीज। लेट्स सी, आई थिंक it is visible. Let's start the discussion. Today's judgment is with regard to section 148A, subclause D. This judgment said that if the jurisdictional AO has passed any order under section 148 capital A subclause D without considering the adjournment request, that is bad in law, and such order is quashed by Honorable Gujarat High Court. What this decision was, what are the facts of the case, what we will learn today, we will discuss in detail. Meanwhile, please mention whether you are able to see me. Yes. Okay, thank you. I will share this presentation with you. I have given some basic legal terms before starting discussion on this important judgment. But in this presentation, I am not taking up these legal terms because I expect that only professionals are attending this webinar and everyone is understanding these terms understanding these terms very, very well. These terms are mentioned here only for the beginners and newcomers in the law field, so that they can understand, they can judge the terms and analyze the judgment so powerfully and so better way, in a better way. So friends, the term defines are here. Quorum. What is quorum? What is petitioner? What is respondent? What is writ? ये सारा कुछ. What is impugned? What is quashed? And now questions to be solved through this judgment. What questions we are going to settle? Which question we are going to settle? So let's start. The first question we will settle by analyzing this judgment is what assessee has the right to apply for adjournment of SCN issued under section 148A capital B. क्या assessee को अधिकार है कि वो adjournment के लिए अप्लाई कर सकता है जब कभी उसे इंक्वायरी नोटिस आता है, इंक्वायरी शो कॉज नोटिस आता है अंडर सेक्शन 148 कैपिटल ए सब क्लोज बी में? अगर आपका आंसर यस है तो what are the procedure, what is the method through which this adjournment request application is to be made? The third question we are settling today, whether AO is mandated by law. Very important question. Whether AO is mandated by law to consider and accept adjournment accept request to reply SN issued under section 148 clause B.
Third or fourth, whether jurisdictional assessee officer can reject the adjournment application made by the assessee, or it is duty bound for the JO to accept the application. This is also answered by Honorable High Court. How practice of AO to consider application, not to consider the application of adjournment, is endorsable by law. And last question, whether communication from AO for rejection or acceptance of adjournment application is mandatory. Everything we will try to learn today. So let's start the judgment. The judgment we are discussing today is relates to Shri Siddhi Foods versus Assistant Commissioner of Income Tax, Circle 1, Bhavnagar, and that is pronounced against Special Civil Application number 9257 of 2022, and date of pronouncement of judgment is 31st January 2023. 31st January 2023. Facts of the case. Facts of the case, that is, show cause notice under section 148 capital A hub clause B issued on 10th March 2022. सिद्धि विनायक के केस में, श्री सिद्धि फूड के केस में शो कॉज नोटिस जो होता है हमारा सेक्शन 148 कैपिटल बी का, वो इशू किया गया 10 मार्च 22 को, और इस शो कॉज नोटिस के अगेंस्ट हमारे एसएससी ने यानी श्री सिद्धि फूड ने एडजॉर्नमेंट की एप्लीकेशन फाइल कर दी 17 मार्च 2022 को, मतलब 7 दिन के अंदर ही एप्लीकेशन फाइल हो गई, और उसमें एओ से समय मांगा गया कि सेम, क्योंकि जो डिटेल आपने मांगी है वो मेरे को तैयार करनी है, उसके लिए समय चाहिए, इसलिए एडजॉर्नमेंट मांगी गई। लेकिन एडजॉर्नमेंट का कोई जवाब नहीं आया, ना रिजेक्शन का ना एक्सेप्टेंस का, और उसने इस नोटिस का जवाब भी सबमिट कर दिया, और जवाब सबमिट हुआ 25 मार्च 2022। अब एडजॉर्नमेंट रिक्वेस्ट जो थी वो जुरिस्डिक्शनल एओ द्वारा कंसीडर्ड नहीं की गई, और विदाउट कंसीडरिंग द रिक्वेस्ट फॉर एडजॉर्नमेंट as made by the assessee, the learned AO has passed the order under section 148 capital A subsection D for opening of reassessment. तो फ्रेंड, इससे एसएससी एग्रीव्ड हो गया, उसे निराशा इस बात की नहीं है, उसने ऑब्जेक्शन इस बात की रेज नहीं की कि वट एवर रिप्लाई आई हैव मेड दैट इज नॉट कंसिडर्ड बाय द एओ. But what objection he raised in his writ petition is that the adjournment application is not considered by AO. Whether it is accepted by AO or whether it is rejected by AO is not informed or not communicated to the SSC. This is the main grievance raised in the writ petition of Shri Siddhi Foods. So these are the facts of the case. Now, क्या issues settle हुए इससे? Issues to be settled. अब issues हमें आज क्या settle करना है, बड़ा important question है. Whether this practice of not responding to the request of adjournment and thereafter to take up matter up any time when the assessing officer deems it appropriate was endorsable and acceptable. आज जो हमें मेन क्वेश्चन तय करना है कि जो एडजॉर्नमेंट रिक्वेस्ट एओ को हम मेड करते हैं उसको रिस्पोंड ना करना, उसके बाद मैटर अपनी मर्जी से किसी टाइम भी टेकअप कर लेना, क्या हमारा जो लीगल सिस्टम है, जो हमारा नेचुरल लॉ का सिस्टम है, क्या इस प्रैक्टिस को इंडोर्स करता है? तो अब देखते हैं व्हाट आर द ऑब्जर्वेशन ऑफ ऑनरेबल गुजरात हाई कोर्ट इन द केस ऑफ श्री सिद्धि फूड्स. द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, द फर्स्ट थिंग द कोर्ट हैज सेटल्ड, द कोर्ट हैज सेड दैट
this practice of not responding, to the request of adjournment and then to take up the matter at any time when the assessing officer deems it appropriate was not endorsable at all, तो पहले पॉइंट में ही ऑनरेबल हाई कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि जो एओ ने किया वो ठीक नहीं है, ये प्रैक्टिस लीगल सिस्टम में एक्सेप्टेबल नहीं है. Once there is a request for adjournment, the second thing the court has settled, उसने कहा कि जब कभी adjournment की रिक्वेस्ट आएगी and if rejection has come, और उसको अगर वो रिजेक्ट भी कर रहा है, आपने रिक्वेस्ट की adjournment के लिए और रिजेक्टेड कर दी, रिक्वेस्ट रिजेक्टेड कर दी, then it should be clear rejection by stating clearly that your application is not admissible for adjournment due to the that reason. Since the case is time barring, I have to decide the matter fast. It should be clear rejection without proper rejection. Meaning thereby, whenever a application for adjournment is made, either it is accepted or rejected by passing a acceptance order or rejection order. Next thing, if any time is required to be granted, there shall be specific date. कोर्ट ने आगे कहा कि अगर आपने एडजॉर्नमेंट की एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया है और आप उसे कुछ और समय ग्रांट करना चाहते हैं तो एक स्पेसिफिक डेट तय करेंगे, और ये डेट assessee को बताई जाएगी. Third thing the court has settled. Fourth thing, it appears that, ऐसा प्रतीत होता है, being aware of the request of adjournment, कोर्ट ने कहा कि ऐसा लगता है कि adjournment request का assessing officer को पता था, परंतु assessing officer choose not to accede such request. Then annulatory took up the matter on 31st March 2022. जानबूझकर assessing officer ने ये मैटर 31 मार्च 22 को क्लोज किया, टेक अप किया, जानबूझ के, जानते हुए कि ऐसा एडजॉर्नमेंट रिक्वेस्ट है, उस पर कुछ ना कहते हुए ये किया. नाउ अब पांचवी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट, कोर्ट ने इटसेल्फ एडमिट कर दी, आजकल फेसलेस असेसमेंट का जमाना है, जब सारी प्रोसीडिंग फेसलेस हो गई हैं, तो कोर्ट ने कहा इन फेसलेस असेसमेंट्स द assessee has no access directly to the assessing officer and he would be completely clueless as to which date on which now the matter is to be next taken. जब उसने ना हाँ बताई ना बताई, मेरे पास संपर्क साधने का कोई साधन नहीं फेसलेस असेसमेंट में, तो असेसी को कैसे पता चलेगा कि उसका मैटर अब किस डेट को टेकन ओवर हो रहा है. तो इस वजह से असेसी एट द मर्सी ऑफ एओ है. फेसलेस इन्वायरमेंट में तो इस बात की जरूरत और ज्यादा बढ़ जाती है कि वट एवर द डिसीजन ऑन द एडजॉर्नमेंट एप्लीकेशन, इट विल बी टेल वेरी वेरी क्लियरली टू द poor assessee, because there is no contact point between AO and the assessee. Next thing, either there shall be a specific adjournment or specific order that requires communication. Specific adjournment होनी चाहिए या specific order हो, जो भी है उसकी communication होनी जरूरी है. The sixth point the court has settled, the least that can be done, कम से कम जो करना चाहिए था, कोर्ट ने कहा था लीस्ट दैट कैन बी डन, जो किया जा सकता था, सेंड सच कम्युनिकेशन थ्रू ईमेल और एनी ई मोड, कम से कम ई मोड से ही भेज देता, ईमेल से ही भेज देता, और उसे तब मैटर फर्दर प्रोसीड करना चाहिए था. तो ये कोर्ट ने बड़ा क्लियरली कह दिया.
और लास्ट में क्या जजमेंट दी. What is the judgment of the court now? Court has said in its concluding remarks, in its valedictory remarks, nothing is of that sort. Nothing of that sort was done. जो पीछे बताई गई चीजें हैं ऐसा कुछ भी नहीं किया गया. And this order of section 148 capital A subclause D of the Act and the issuance of notice under section 148 of Income Tax Act deserve interference. Deserve interference. Both need to be quashed. Both need to be quashed. The matter goes back to the stage of considering the reply filed by the assessee on 25th March 2022. तो कोर्ट ने साथ में ये कहा ये मैटर अब बैक स्टेज पे चला गया है. और बैक स्टेज कौन सी है? जिस दिन रिप्लाई फाइल हुआ था 25 मार्च 22 वाला था. लेट ड्यू कंसिडरेशन बी गिवन टू सच रिप्लाई. जो उसने रिप्लाई फाइल किया है उसे कंसिडरेशन दी जानी चाहिए. पटिशनर को एक स्पेसिफिक टाइम ऑफ फाइलिंग एडिशनल रिप्लाई मिलना चाहिए और उसको एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड प्रोवाइड की जानी चाहिए और स्पेसिफिक कम्युनिकेशन होना चाहिए उस अपॉर्चुनिटी का थ्रू ईमेल और थ्रू ई पोर्टल. और विदाउट टेकिंग एनी एडजर्नमेंट लेट द सेम बी प्रोसीडेड. अब कोई एडजर्नमेंट नहीं देना चाहते, कोई बात नहीं, ना दीजिए, आप इसे प्रोसीड कीजिए, लेकिन after affording the opportunities to the petitioner. So this is a very, very important judgment with regard to the proceedings going on nowadays with regard to the reassessment proceeding. I think everybody who is watching this webinar, who are attending this live talk is benefited with this judgment. And if any doubt, any question with regard to this judgment, you can ask me right now. I will try my best to answer your queries. How was the judgment? How you read the session, please tell me by writing in the chat box. Or if any query is there, you can ask me right now, please. If there is no query, we are wind up the session right now. Just 1 minute more, I am live. If any doubt is there, you can ask. Otherwise, please write how was the session. We will start this series to discuss the case laws with regard to the reassessment proceeding. On every alternate day, I am bringing a new judgment for you. We have already discussed two judgments, once with you with regard to section 148, one regarding adjournment, and एक उससे पहले आपको डिस्कस की थी कि इंफॉर्मेशन एंड इंफॉर्मेशन सुजेस्टिंग एस्केपमेंट ऑफ इनकम में क्या फर्क है. चावला साहब एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सर व्हाट इज द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ नोटिस बिफोर टाइम बार्ड केसेस. और एटलीस्ट 1 month बिफोर, at least 30 days time gap between issue of notice and reopening of assessment is there, because maximum 30-day time period will be provided to give show cause notice and to finalize the assessment. So that means if the AO wants to reopen the assessment with regard to assessment year 1920, then he has to start inquiry proceeding, I think at least 1 month before. That means if the time bar date is 31st March 2023, then the reassessment proceeding is to be started by 1st March at least. Any other participant? Any other question? Mr. Mukul is saying very interesting series of case law. Thank you, Mukul. I think nobody wants to raise any other query. Everything is okay now. That's why we are winding up the session. तो फिर मिलेंगे आपको साथ एक नई जजमेंट के साथ.
on alternate day. Thank you so much. Good day, good night.